Sonal Rasi. Hi Raj Lakshmi. I am all good. What about you? So how are you all guys? कैसे हैं सब लोग? Just a second. हेलो आकाश. यस बिल्कुल बढ़िया सब. आप बताएं आप कैसे हैं? मस्त राज लक्ष्मी. ग्रेट. So hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So this is your accounts master teacher MLA Sheetal Choudhary. M for multi-talented, L for lion-hearted and A for ambitious. Hi Geet. Hi Raj. Yes, you're finally back after so long time. Yesterday I was thinking कि राज क्यों क्लास नहीं ले रहा, and here you are. So, if you guys are new to my channel or if you don't know me, then first let me introduce myself to everyone. So here are some fun facts about me. First, I am a CA aspirant and I have qualified CA Foundation as well as CA Intermediate both in first attempt. And I have also completed my graduation from University of Delhi with a degree in BCom Honors. So I have done BCom Honors. Also I have done MCom, my Masters. And in my free time, I love cooking and I love singing. So this is some fun facts. These are some fun facts about me. Hi Prajwal, I am all good. Hope you are also doing well. So, if you guys haven't subscribed to my channel yet, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do subscribe my channel for more such live classes. Also, do like this video, do give it a big thumbs up and do share it with your classmates. Hi Karthik. And if you have not joined the Telegram channel as well, then do check out the description box below. So in description box you will get the Telegram channel link, and if you want to get the notes, so I'm sharing all the notes on the Telegram channel, so do join it अगर आपको भी notes time पे चाहिए तो. Hi Tanisha, you are doing well. Okay Prajwal. And as we all know, this is class 12th accountancy session and we were doing the chapter accounting for partnership firm fundamentals. ये वाला chapter कर रहे थे and we have almost completed the chapter. सिर्फ एक topic बचा है, that is guarantee, जो हम कल की क्लास में कर लेंगे. कर लिया. Thank you जेठालाल. But what's your actual name? तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ एडवांस क्वेश्चन. इन द येस्टरडे सेशन, कल की क्लास में हमने टॉपिक किया था और कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, बट दोज वर द बेसिक क्वेश्चंस. वो बहुत इजी वाले क्वेश्चंस थे. आपकी बुक में देयर आर अबाउट 15 to 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट एंड सम ऑफ देम आर सो टफ, सो ट्रिकी, सो एडवांस्ड. सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस क्लास. तो आज की क्लास में हम करेंगे कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट. हाय मनज, आई एम ऑल गुड. व्हाट अबाउट यू? हाय सुगंधी, हाउ आर यू? ओके अजय. So let's first discuss the homework that I gave you in the previous class. तो कल की क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ द सेम टॉपिक. लेट्स फर्स्ट डिस्कस इट and I have seen the comments that many of you have already solved it. So let's see किस किसने कमेंट किया था पिछली क्लास में.
So here we have the names of the students, those who have solved it. Well done, Akash. Pathak, you have solved it. Well done, Shubham. Great, keep it up. Well done, Karthik. Superb, Karthik. Well done, Prajwal. You are answering it so fast, Prajwal, now these days. Congratulations. What about Manas? Manas nahi hai. Raj Lakshmi bhi hai. Okay. Well done, Raj Lakshmi. You have also answered it correct and congratulations. Manas, your comment is missing. So these are the 5 students who have solved the question and who have answered it in the comments box. Okay, Manas, we'll be waiting for you. इसमें से बहुत सारे वेदांतु वाले हैं, ऑलमोस्ट सारे वेदांतु वाले हैं. So, congratulations to each and every student, and जिन्होंने नहीं किया, it's okay, we will be solving it now. तो चलिए देखते हैं कि क्या होमवर्क दिया था मैम ने लास्ट क्लास में. And this is the question that I have given you. So question क्या है, आइए जल्दी से पढ़ते हैं. Okay, Ajay. Hi, Somnath. How are you? So, question है, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 2:2:3 होगा, maybe 2:2:3 respectively. After the accounts of the year had been closed, it was found that interest on drawing at the rate 6% per annum has not been taken into consideration. तो हमें पता लगा कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इट हैज बीन ओमिटेड, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए. नाउ द ड्राइंग्स आर गिवन 20,000, 24,000, 32,000 and 44,000. These are the drawings. Now what we have to do is we have to give the necessary adjustment entry. आपको क्या करना है, adjustment entry पास करनी है. You have to make a table showing adjustment and you have to pass the single adjustment entry. So this was the homework. Okay, Prajwal. So first of all, what we will do? First you have to calculate interest on drawing. पहले तो हमें interest on drawing calculate करना पड़ेगा because the drawings are given and the rate of interest is given. So A, B, C and D. Okay, there are 4 partners, not 3. A, B, C and D are partners. Multitasking, huh, Somnath? So A's drawing is 20,000, B's drawing is 24,000, C's drawing is 32,000 and D's drawing is 44,000. Multiplied by rate upon 100. The rate is 6%. So 6%, 6%, 6% and 6%. Then you will multiply it with 6 months. Because I have told you this many times, when the time period or when the date is not mentioned in interest on drawing, by default it is calculated for 6 months. So this is how you will calculate interest on drawing. And here you can see the answer. तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चारों पार्टनर्स का. A 600, B 720, C 960, D 1320. So we have calculated the interest on drawing. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर को देते हैं या पार्टनर से लेते हैं? टेल मी.
You allow interest on capital to the partners, interest on drawing to the partners, or you charge it from the partners. What do you think? Come on, I have not received any answers. And here we go. Well done, Akash. Yes, interest on drawing is charged from partners, is taken from the partners. Interest हम partners से लेते हैं, and that's the main point. So, interest on drawing is an expense for the partner because we will take it from the partners. And it is an income for the firm. तो पार्टनर के लिए वो खर्चा है और फर्म के लिए वो क्या है, इनकम है. Well done, Karthik. So keeping this in mind, you have to make that table showing adjustment. हम इसको ध्यान रख के table showing adjustment बनाएंगे. So let's now jump on to table showing adjustment. Particulars A, B, C, D and the total amount. So, interest on drawings earlier omitted. आप interest on drawing पहले omit कर दिया आपने, आप लेना भूल गए. So अब आप क्या करोगे, पहले लेना भूल गए, अब आप ले लोगे. You will take it now. And when you will take something from the partners, their capitals will decrease. We are charging it from the partners, their capitals will decrease and hence their capital will be debited. क्या करेंगे, partners को debit करेंगे. So A 600, B 720, C 960, D 1320. This is the interest on drawing. Then you will do the total. आप क्या करोगे, total करोगे. Total will be कितना होगा total? 600 plus 720, 1320 plus 960. एक minute. So total is 3600. This is the total interest received by the firm. Now, the firm is receiving 3600. It is expense for the partners and it is income for the firm. Firm को क्या हुआ, profit हुआ. It is an income, it is a profit to the firm and this profit will be distributed between partners. So now you will distribute the profit. ये जो profit firm को हुआ है ये हम क्या करेंगे, partners में बांट देंगे in their profit sharing ratio which is 2:2:3:3. So यही हमारी profit sharing ratio है 2:2:3:3. So profit will be distributed in the same ratio 2/10, 2/10, 3/10 and 3/10. So it will be 360 multiplied by 2, 720, 720, 1080, 1080. So we have distributed the profits in the profit sharing ratio. तो पहले आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया पार्टनर से, देन यू डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स. अब क्या करोगे, यू विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट. 600, 720.
द डिफरेंस बिटवीन 2 इज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया? 120. वेलकम बैक मनस. So 600, 720, the difference is 120. Then 720 and 720, the difference is nil, 0. 960 and 1080, the difference is 40 and 80, 120. And 1320 and 1080, the difference is 240. So this is the difference between the debit and the credit among all the partners. Now, किसकी side ज़्यादा है? Which side is higher? The debit side, the credit side is higher. 720 is higher. This is nil. यहाँ पर 960 debit side is higher, and here also the debit side is higher. मैंने कुछ गलती करी क्या? This is credit, sorry. 1080, the credit side is higher in case of C. It's okay, Manas, I can understand. So this is your answer. A is having credit balance of 120. B is having nil balance. C is having credit balance of 120. And D is having debit balance of 240. So your answer is on the screen, guys. The journal entry will be D's capital account debit 240, to A's capital account 120, to C's capital account 120. This was your homework. So tell me, is it clear to everyone? Hi Shubham. Clear Prajwal, clear Raj Lakshmi, clear Akash, clear Tanisha, clear Manas. Okay. So now let's begin with today's session and let's see what we are going to have today. So आज हम क्या करेंगे? Today we will be only solving the practical questions, the advanced level questions of past adjustment. And we will solve total 3 questions and तीनों question बहुत अच्छे questions है. They are very interesting and very tricky at same time. So please pay attention everyone. बहुत ध्यान देना है आपको, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दोगे तो समझ नहीं आएगा. So let's start with the session now, but first I want to know, are you guys ready for this session? तैयार हो क्लास के लिए? हाँ या ना? Hi Lipakshi. You are getting bored again. So let's start with our first practical question. And here we have our first practical question. पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, and then we will move on to the solution. तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. So ready शिवांग, great. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला है अनिल, सुनील एंड संजय, 3 partners have omitted
interest on capital for 2 years. We have done a similar type of question in previous session, but there is a huge difference. कल भी हमने कैसा क्वेश्चन किया था जहां पर we have omitted interest on capital for 2 years, but यहाँ पे क्या डिफरेंस है अभी आपको पता लगेगा. So we have omitted interest on capital for 2 years ended 31st March 2016. Means you have omitted interest on capital of 2015 and 2016. आप 2 साल का इंटरेस्ट भूल गए. Now their fixed capitals in 2 years were Anil 8 lakh, Sunil 7 lakh and Sanjay 3 lakh. These are their fixed capitals. So pay attention on the word fixed. The capitals are fixed means when you will pass the adjustment entry, you will not use capital account, you will use current account. अब जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट से पास नहीं करोगे, करंट अकाउंट से पास करोगे क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड है. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब यही जो है मेन चीज है. इन द प्रीवियस क्वेश्चन only one profit sharing ratio was given, but in this question the profit sharing ratio is different for both the years. You have omitted interest on capital of 2 years and the ratio of those 2 years is different. So profit sharing ratio in the first year is 4:3:2 and in the second year it is 3:2:1. Now you have to give the single adjustment entry at the beginning of next year. तो ये क्वेश्चन था. अब 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए. अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, कीपिंग इन माइंड दैट द रेशियो इज डिफरेंट फॉर बोथ द ईयर्स. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है. ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. तो let me first make a table showing adjustment. Particulars: Anil, Sunil and Sanjay. Then total. अब प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना. हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए. वी omitted इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो नाउ यू विल गिव इट. देना भूल गए कोई बात नहीं, अब दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्लियर omitted and we have omitted of interest on capital of 2 years. So first year ending 31st March 2015 and second year ending 31st March 2016. So the capitals are same for both the years. जो दोनों ईयर्स की कैपिटल है वो तो सेम है. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड द कैपिटल्स आर 8 lakh, 7 lakh एंड 3 lakh. सो इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट कितना आएगा, 10% ऑफ 8 lakh 80,000, 10% ऑफ 7 lakh 70,000, 10% ऑफ 3 lakh 30,000. This is your interest on capital. 80, 70 and 30. 80, 70 and 30. The total interest on capital is 1,80,000 for the first year. And it will be same for the second year as well. Second year का भी interest same रहेगा क्योंकि मैम capital तो same है, तो इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, सेम.
So interest on capital of second year is also 1,80,000. And we will credit the partners. क्योंकि interest is given to the partner. When you will give interest, their capitals will increase. So hence they will be credited. Hi Omkar. अब टोटल ए को कितना इंटरेस्ट मिला? टोटल अमाउंट गिवन टू ए इज 1,60,000. टोटल अमाउंट गिवन टू सुनील इज 1,40,000 and total amount given to Sanjay is 60,000. And the total amount paid in 2 years is 3,60,000. फर्म को कितना लॉस हुआ है इन टोटल 2 years में? 3,60,000. अब जो हमने कल क्वेश्चन किया था, द क्वेश्चन दैट वी हैव डन येस्टरडे, इन दैट क्वेश्चन we have distributed this 3,60,000 at once. हमने एक बार में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. But in this question you cannot distribute it all together. आप इसको एक बार में नहीं बांट सकते. Why? Because the ratio of these 2 years is different. दोनों ईयर्स की जो रेशो है वो अलग अलग है. सो यू विल डिस्ट्रीब्यूट द लॉस ऑफ फर्स्ट ईयर इन द यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन द रेशो ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज 4:3:2, एंड द लॉस ऑफ सेकेंड ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ सेकेंड ईयर, विच इज 3:2:1. So these two losses will be distributed individually. अलग अलग बांटोगे क्योंकि अलग अलग रेशो है. So we are writing distribution of loss. Distribution of losses. First year in the ratio 4:3:2. Second year in the ratio 3:2:1. So we are distributing 1,80,000 in 4:3:2. It will be 80,000. 1 minute. 60,000 and 40,000. This is how we have distributed 1,80,000 in the 4:3:2. Then the second year loss will be distributed in 3:2:1. 3/6, 2/6, 1/6. So it will be 90,000, 60,000 and 30,000. So first year in 4:3:2, second year in 3:2:1. So total loss taken by Anil is 1,70,000. Total loss taken by Sunil is 1,20,000. And total loss taken by Sanjay is 70,000. So this is the total amount that should be debited to partners' capital, because losses are taken from the partners. हम loss partners से लेते हैं, तो ये जो अमाउंट है ये पार्टनर्स में डेबिट होगी, बिकॉज इट इज अ लॉस. लॉसेस दे कॉल इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. And now we know what we have to do. You will calculate the difference. 160, 170. The difference is 10,000 and the debit side is more. So Anil is having 10,000 debit balance. 140, 120. The difference is 20,000 and it will be credit because 140 the credit side is more.
60,000, 70,000, the difference is 10,000, and this will be debit balance because 70,000 debit is more. So Anil is debited, Sanjay is debited, and Sunil is credited. So Anil's current account debit, Sanjay's current account debit to Sunil's capital account. It will be current account. Anil current account debit, Sanjay's current account debit to Sunil's current account. Anil debit 10,000, Sanjay debit 10,000 to Sunil 20,000. So this is your answer. So this was our first question. Tell me, is it clear to everyone? सब कुछ समझ आया? And make sure you are writing narration as well. Otherwise, the examiner will deduct your marks. अरे वाह, गीत सुपर से भी ऊपर क्लियर. क्लियर तनेशा? यस राजलक्ष्मी. क्लियर कार्तिक? Done. Akash, Shubham. So this was our first question. Now let's move on to our second question. बन पहले गया बस टाइप करने में लेट. Okay. Narration being adjustment entry passed for what? You have to write further as well. Being adjustment entry passed for omission of interest on capital. Interest on drawing, जो भी reason है. Okay, so here we have your second question, guys. अब पहले question समझते हैं again. Let's first understand what it is trying to say. So the question is X, Y, and Z. They are three partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. This is the profit sharing ratio. Again, the capitals are fixed. Their capitals fixed are 2 lakh, 150 and 125. For the year ended 31st March 2018, interest on capital was credited to them at the rate 8%. आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? 8% इंस्टेड ऑफ 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था 10%. It has to be given at the rate 10%, but by mistake we have given 8%. Give the adjusting journal entry. अब आपकी बुक्स में पता है क्या किया गया है? What is done in your books? We have given 8%. तो हमने क्या किया? पहले हम उन्हें 10% देंगे. हमें 10% देना था, हम 10% देंगे और हम वापस ले लेंगे जो हमने 8% उन्हें दे दिया. आपकी बुक्स में ये किया है, 10% दिया है और जो 8% पहले दे दिया था वो वापस ले लिया. बट देयर इज अनदर सिंपल मेथड एज वेल. इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं. कैसे? लेट्स सी इट. सॉरी गीत, आई स्किप्ड इट. मैं इसका क्वेश्चन ऐड करना भूल गई. Okay, so let me first draw table showing adjustment.
अरे वाह आकाश. X, Y and Z and total. So यहाँ पे हमसे क्या गलती हुई है? We have given interest on capital at 8% instead of 10%. देना था 10% लेकिन हमने दे दिया 8%. We have given 2% less. हमने 2% कम ही तो दिया है ना उन्हें. So हम क्या करेंगे? Now we will give 2% to them. जो हम 2% कम दिया है हमने उन्हें, जो हम देना भूल गए, अब हम वो 2% को दे देंगे. So now we are giving interest on capital at the rate 2% that was earlier omitted. So you will calculate 2% on the capitals. 2% of 1,50,000, 2% of 2 lakh, 2% of 1,25,000. So it will be 4,000, 3,000 and 2,500. So we are giving interest on capital at 2% and the answer is 4,000, 3,000 and 2,500. And as you are giving it, so their capitals will increase and hence they will be credited. उनकी capital को क्या करेंगे? Credit करेंगे. So the total interest on capital that is given to partner is 9,500. हमने टोटल कितना इंटरेस्ट दिया उनको? 9,500. अब दिस इज एन इनकम फॉर द पार्टनर बट इट इज अ लॉस टू द फर्म. फर्म का क्या हुआ? नुकसान हुआ. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इनकम टू द पार्टनर बट एक्सपेंस टू द फर्म. So this will be distributed, distribution of losses in the profit sharing ratio which is 5:3:2. So इसको हम बांट देंगे 5:3:2 में and it will be 4,750, 2,850 and 1,900. So this is distribution of loss and when you distribute loss, partner capitals are debited. So पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जो हम 2% देना भूल गए थे, जो हमने कम दिया था पहले पार्टनर्स को, एंड देन उससे फर्म को लॉस हुआ and we have distributed that loss in the profit sharing ratio. Now calculate the difference. 4,000, 4,750, the difference is 750 and the debit side is more. 3,000, 2,850, the difference is 150 and the credit side is more. 2,500, 1,900, the difference is 600 and the credit side is more. So this is your answer. X is debited, Y and Z are credited. So X current account debit, to Y's current account, to Z's current account. X current account debit 750, to Y's current account 150, to Z's current account 600. So अगर आप कम दिया है आपने पार्टनर्स को तो आप अब ज्यादा दे दोगे. यहाँ पर क्वेश्चन में उल्टा भी हो सकता था, यहाँ पर वाइस वर्सा भी हो सकता था.
it might have said that interest on capital was credited to partner at the rate 10% instead of 8%. तो यहाँ पे if it was like this, it means you have given them 10% where it was 8%. So it means you have given them extra. हमें देना था 8% लेकिन हमने दे दिया 10%, तो हमने 2% एक्स्ट्रा दे दिया. एंड नाउ अब इसमें क्या करते, आप वो वापस ले लेते. तो अगर आपने कम दिया है तो उन्हें ज्यादा दे दो, और आपने ज्यादा दे दिया है तो उसको वापस ले लोगे. तो यू विल नाउ डेबिट दी पार्टनर्स, यू विल टेक इट बैक. वी आर टेकिंग दैट 2% बैक. So you will debit the partners, and then when you will take it back, it will be income for the firm. आप जब आप इसको वापस लोगे तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा. Then you will distribute this profit and you will credit the partners. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेते हैं, नॉट IOC, IOD. हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं, और लेने से हमें क्या होगा, प्रॉफिट. और प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वी आर क्रेडिटिंग इट. सो दिस वाज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ गुड वन. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आया ये क्वेश्चन? Got it, Karthik? Yes, big mistake. कोई नहीं, गलतियों से ही सीखते हैं हम. मक्खन क्लियर? ग्रेट. क्लियर आकाश? अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो दुनिया बदल देगा आपकी. So I'm warning you guys in advance. Third question is very 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 tricky. So please be attentive. अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन हल्का सा भी आपका ध्यान भटका तो क्वेश्चन भटक जाएगा. AC ऑन हो गया? नो. फैन अब मैंने चलाया है. मैंने फैन बंद कर रखा था लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी. आई हैव स्विच्ड इट ऑन नाउ. Yes, practice तो करनी पड़ेगी प्रज्वल, because right now I am solving it, but you have to solve it on your own अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहा है. तो चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे जो आपकी धड़कने रोक देगा. तो here we have the third question guys. Let's read it. देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में जो मैम इतनी चेतावनी दे रही है हमें. So the question is, on 1st April 2020, the capitals of A and B were 4 lakh and 2 lakh respectively. ये capitals हैं partners की. They divided their profits in the capital ratio. Profits को कैसे बांटेंगे? Capital ratio में. So capital is 4 lakh and 2 lakh. The ratio will be 4:2, or you can say 2:1. This is their profit sharing ratio. On 31st March 2021, they found that the following transactions were not posted through the books. Books जब close हो गई ईयर के एंड पे, उनको पता लगा कि ये सारी transactions हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं. अब क्या क्या रिकॉर्ड करना भूले हैं वो देखते हैं. They have omitted interest on capital at the rate 12% per annum. Interest on capital देना भूल गए, कोई नहीं. They have also omitted interest on drawing, which is 12,000 for A and 10,000 for B. अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे वहां पर या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता था.
अब इस क्वेश्चन में सबसे खतरनाक चीज क्या है कि ये दोनों हमें साथ में दे दिए। सो दिस इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन। दोनों जब साथ में आते हैं ना तब धमाका होता है। वो धमाका क्या होगा, वी विल सी इट। फिर कमीशन ड्यू टू बी ₹20,000 ऑन स्पेशल ट्रांजेक्शन। कमीशन जो हमें बी को देनी थी हम वो भी भूल गए। एंड ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹50,000। ए को सैलरी देना भूल गए। ये चार चीजें आप देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज you are required to pass a single adjustment entry to rectify the same। आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है to rectify the same। अब वो एंट्री कैसे पास होगी, वही तो मेन गेम है। So first we will make table showing adjustment। Let's make it। क्वेश्चन पढ़ के कैसा लगा बच्चों, इजी या मुश्किल? मतलब क्वेश्चन समझ आया कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? इजी, ओके, मतलब क्वेश्चन समझ आ गया। बहुत गलतियां करी हैं, हाँ गलतियां तो बहुत करी हैं। गलती उन्होंने करी लेकिन सुधारनी हमें पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड दोज थिंग्स जो आप देना भूले। अब यहाँ पर हम पहले कौन सी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड सैलरी, बिकॉज दे आर टू बी गिवन। पहले हम इन चीजों को देंगे और फिर हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो हमें लेनी है पार्टनर से। तो चलिए पहले ये सारी चीजें दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। So 12% of 4 lakh will be 48,000. 12% of 2 lakh will be 24,000. Let's give it. Interest on capital earlier omitted 48,000 and 24,000. And as you are giving it, you will credit partners. So कितना दिया हमने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इट इज 72,000. आफ्टर दैट you have omitted commission to be 20,000. So commission भी दे देंगे. Well done Manas, you have already solved it. Great. So commission to B, no commission to A. Commission to B is 20,000. So total में लिख दो 20,000. Then salary to A. Salary to A कितनी है? 50,000. A is to be paid a salary of 50,000. तो A की सैलरी रिकॉर्ड कर लेते हैं 50,000 एंड B को कोई सैलरी नहीं मिली. नाउ रिकॉर्ड इट इन दी टोटल 50,000. अब हमें ये सब पार्टनर्स को देना था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया. इंटरेस्ट ऑन सैलरी कमीशन देना था, दे दिया. सैलरी देना था, दे दिया. अब क्या करेंगे? यू विल फाइंड द टोटल कि हमें पैसा कितना देना है पार्टनर्स को. ए को हमें टोटल देना था 98,000. बी को टोटल देना था 44,000 एंड टोटल दोनों पार्टनर्स को देना था कितना? 12 and 14, 142,000.
ये हमें टोटल पार्टनर्स को पैसा देना था। अब आप पार्टनर्स को पैसा देने वाले थे और आपको एक जोर से थप्पड़ आया पीछे से कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो लोगे, यू हैव ऑल्सो ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी तो भूले हो, इसको भी तो ले लो। तो जो हम लेना भूल गए, पहले तो हमने देखो पूरा जो देना था वो दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन दे दिया, सैलरी दे दिया, ये टोटल पैसा हमें पार्टनर्स को देना है। लेकिन हमें पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भी तो है। तो आप क्या करोगे, यू विल सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दोगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 12,000 एंड 10,000। सो 98,000 में से 12,000 माइनस कर दो, 44,000 में से 10,000 माइनस कर दो। अब ये जो फाइनल अमाउंट है ये आप पार्टनर्स को दोगे, 86,000 टू ए एंड 34,000 टू बी। दिस इज द टोटल अमाउंट विच इज पेबल टू दी पार्टनर। सो 142 में से हमने 22 माइनस कर देना है एंड द टोटल अमाउंट विच विल बी पेड इज 120। एक मिनट, सो कितना पैसा देना है हमें पार्टनर्स को, 1,20,000। सो दिस इज द फाइनल अमाउंट विच इज पेड टू ए एंड बी, 86,000 टू ए, 34,000 टू बी। सो दिस इज द टोटल लॉस टू द फर्म। फर्म को कितना लॉस हुआ, 1,20,000। अब ये लॉस का क्या करेंगे हम, this loss will be distributed among partners, distribution of losses। इस लॉस को क्या करोगे, पार्टनर्स में बांट दोगे in the ratio 2:1, that is their capital ratio। so distribute 1,20,000 in 2:1, it will be 80,000 एंड 40,000। हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ कैलकुलेट द डिफरेंस। अब क्या करो, डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, 86 माइनस 80, और यहाँ पर हम पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। एंड यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, यू आर डेबिटिंग द पार्टनर्स। सो 86 माइनस 80, 6,000 क्रेडिट बैलेंस, 34 माइनस 40, 6,000 डेबिट बैलेंस। A is having credit balance, B is having debit balance. So this is your answer. B's capital account debit to A's capital account. ये है आपका आंसर। This was the question that was one of the toughest question. तो जब भी डेबिट और क्रेडिट नेचर के आइटम साथ में आ जाए ना, तो आप पहले क्रेडिट वाले को रिकॉर्ड करो, फर्स्ट रिकॉर्ड द आइटम्स ऑफ क्रेडिट नेचर एंड देन सब्ट्रैक्ट द आइटम ऑफ डेबिट नेचर। तो पहले हमने कमीशन, इंटरेस्ट, सैलरी सब दे दिया, उसके बाद हमने माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डन प्रज्वल, जो आज फास्टेस्ट आंसर देगा मैं उसको पिन करूंगी। ग्रेट। नाउ इट्स नाइस टू टफ एट ऑल। Not current account, Shubham. The capitals are not fixed. Capitals fixed नहीं है, सिर्फ ये बोला था the capitals are 4 lakh and 2 lakh. Capitals fixed नहीं है, so you will write down capital account,
not current account. Okay, Shubham? It will be capital, not current. Anurag, the capitals are not fixed, beta. Capitals are fluctuating. कुछ भी नहीं बोला. By default, the capitals are fluctuating. And when the capitals are fluctuating, you will write capital, not current. It's not tough at all. Okay. So these were the 3 trickiest questions of past adjustment, and I hope that all the questions are clear to you guys. Yes, now it's good, Anurag. That's the answer. So yes, that's it for today, but we also have a homework, and homework is the trickiest of all the questions. तो homework जो है वो इनसे भी ज़्यादा tricky है, but I want to see how many of you are able to solve it. We have done similar question in yesterday's session, but यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ है. गीत डोंट वरी, मैं एक बार क्वेश्चन मेरे को देखना पड़ेगा. वील टेक अ क्वेश्चन. आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख देना. आई विल ऐड इट इन दी नेक्स्ट क्लास, इन टुमारो सेशन. अरे ओके गीत, बस कमेंट्स बॉक्स में लिख देना सो दैट आई रिमेम्बर इट. Challenges are good, so this is a challenge for you, a real challenge. So this is the question, guys, and let's see how many of you are able to solve it. So मैं question को अभी नहीं समझा रही because it's a kind of test for you. So this is the question for your homework, and you have to tell me the adjustment entry in the comments box, and I will pin up the comment who will be answering it fastest. तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है. और मुझे लग रहा है काफियों ने अभी तक शुरू भी कर दिया सॉल्व करना. So that's all for today, guys. आज के लिए इतना ही, and I hope you guys enjoy this session. You liked the session. So if you really liked it, if you really enjoy the class, then please do like it. Please do give it a big thumbs up, and do share it with your classmates. आज आपका पेपर था, टेस्ट था. Should I share a paper? Yes, you can share it on Instagram. I have also provided my Instagram ID, my username in the description box. So you can share your doubts, you can share your question paper with me on Instagram. I am there for you guys. So I will be sharing the notes with you on the Telegram channel. You all can join it. The link is given in the description box below. So if you guys have not subscribed to my channel, then please do subscribe it, guys, for more such live sessions. And yes, please do let me know in the comments box that whether you like the class or not. अगर class आपको पसंद आई है तो please do write it in the comments box. And thank you so much. Thank you everyone for watching the session. Now in the next class we will be having the last topic of this chapter. So in tomorrow's session, this chapter will be over, guarantee of minimum profit. And on Sunday, I'll try to have some interesting class with you. Either we'll have a MCQ session or we'll have a test kind of thing. So stay tuned for Sunday session as well. Sunday को मैं एक online test रखूँगी. I will be having questions. You guys have to solve it and you guys have to answer me in the comments box. So thank you everyone. Thank you so much for watching the classes. If you liked it, then do like, do share and do subscribe. Now we'll see you all tomorrow at 8 p.m. at the same time. Till then, bye bye. Good night.